good morning, welcome back to my YouTube channel. This is Priyal and we are back with another YouTube video, YouTube vlog. Because I am going on staycation and अभी इस टाइम पे you all might be thinking कि जब भी मैं staycation या कहीं घूमने जाती हूँ तभी vlog करती हूँ क्या? तो yes, because otherwise I have made 100 days का vlog series जिसमें you can see कि day to day life में मैं क्या करती हूँ. So that's why, and because we are going on staycation today and mind you it's a sponsored but वो Instagram के लिए. So yes, I will tag my Instagram profile over here, so जाके follow कर लेना definitely. And by the way, we have hit 1K subscribers, so yeah, it's छोटू सा ही, but congratulations to me and you all, because thank you so much for subscribing to my channel. And अगर non subscribers देख रहे हो तो please hit the like button, like, share and subscribe to my channel. So yeah, before that बहुत ज़्यादा पछड़ हो गई है. Let's start our day. And अभी I'm all ready, everything has been done, like my packing and everything has been done. अभी मेरा लुकवार्म वाटर भी हो गया है, ABC जूस भी हो गया है, ओट्स भी हो गया है, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई एम ऑल्सो फिल्मिंग अ व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो. सो वो भी जाके आप लोग देख लेना. एंड येस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर डे एंड लेट्स गो बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट. बिकॉज अभी 12 बज गए एंड it will take almost 2 hours to reach the destination and ये पेंच में ही है. So yes, let's start our day. Guys, do you want to come with me? भाई तुम्हारा बाजार बंद कर. अगले वीकेंड में तो हम जाने वाले हैं ना. Guys, please ignore बहुत ही गंदा सा, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है. Hi guys, so we are on the way. हम निकल गए and अभी दर्पण will join me. एंड उसके बाद पहले हम जाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज वैसे मैंने ओट्स तो खा लिया है बट स्टिल मुझे भूख लग रही है, बिकॉज हाफ ऑफ द वे मुझे भूख लग जाएगी, आई नो. सो या पहले हम कुछ खाएंगे एंड देन वी विल लीव. लेट्स गो. एंड आई डोंट नो, कार में जब भी मैं शूट करती हूँ बहुत ही ज़्यादा स्किन मेरी बर्न आउट हो जाती है, एक्सपोजर अपने आप अप हो जाता है. इट्स टू हॉट. और के छोड़ा है और ये वादिया चली आती है झूले. ना करती चलिए देखे मैं सपने चली. Guys, it is 4 PM and we haven't reached yet. Almost दिन निकल गया है बिकॉज हम लोग लेट निकले थे. 1:32 PM अराउंड निकले थे हम लोग. सो इट टेक्स 2 hours to reach and अभी भी 10 minutes दिखा ही रहे हैं हमको पहुंचने के लिए. Okay, so we have reached to our property and the property looks very beautiful. I will definitely give you a tour. Just wait. Let me just do a freshen up wala thing and then I will give you a property ka tour. Hi guys, so we have been allotted with the room. I just wanted to give you a tour of our room, how it is looking. Yeah, let's go. It is looking, this is the entrance. It's kind of tent cottage kind of room. We have a whole floor length mirror, then very spacious room, very beautiful. And the washroom looks something like this. I mean, wow. Bhai, open bathroom. It's complete open, huge bathroom. We have shower area over here and here too. And wait, on the light. Bhai, on ho ja. Anyway, so room से बाहर आके we have a huge floor length curtains and उसके बाद में ये part which is lovely. See, and then we have a huge swimming pool over there. यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है. And then हर literally property में सारे sides में domes बने हुए हैं. Basically that is reception section. This is restaurant वाला area. And then कुछ 2 BHK, 4 BHK. ये है luxury वाला villa kind of thing. Then they have executive rooms, executive villa sort of thing. और उसके बाद में इधर पे भी rooms ही है. And by the way, I will tag a property ka name over here. So if you want to come with your friends and family or with your loved one, you can definitely check this property.
बाय द वे मुझे यहाँ से पैसे नहीं मिल रहे बट स्टिल बिकॉज मुझे अच्छी लगी तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ या You all see how huge the swimming pool looks and अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है and I can't wait to go inside. Anyway पहले हम करेंगे थोड़ा बहुत property shoot and उसके बाद में we will go straight to the swimming pool. Sahab, this property is huge and I'm not saying ऐसी. It is actually, let me show you इसका entrance कितना प्यारा और कितना ज़्यादा बड़ा है. This is the entrance, like you come from here and then you exit from here. You can park your car over there and you can exit or else. So yeah, this is the entrance and looks pretty nice by the way. Guys, giving you all update in the middle of my shoot because I'm doing the shoot all by myself because never मेरे साथ आया हुआ है but because he's stuck with some work so he is doing his work and वैसे तो उसका possible भी नहीं हो रहा था but because of me he came and yeah I'm doing my shoot all by myself. Like I put in my tripod over here, taking some b-rolls, taking some b-roll shots and yeah I'm enjoying it because I really wanted to do that. Like I love doing my work by myself. So I just got done with my personal shoot जो मुझे एक shoot करना था एक brand के लिए and it's for Amazon Prime sale and आज last day and I'm running already very late and I do have shame for that कि मैं बहुत ज़्यादा late deliver कर रही हूँ because मुझे product से late receive हुए so I can't do anything. So anyway I just got done with that and I will quickly change my outfit and थोड़ा बहुत फिर से property का शूट करेंगे हम एंड उसके बाद में विल गो टू पूल बिकॉज ये आउटफिट पे बहुत सारे शॉट्स आ गए एंड Hi guys, so I quickly changed my outfit and I wanted to show you all my outfit. Wait for a second. जैसे जैसे इवनिंग हो रही है ये प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा सुंदर हो रही है. लाइक कैन यू सी द लाइट्स बिहाइंड मी, इट्स लुकिंग सो फ्रिकिंग गॉर्जियस. गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया था बिकॉज मैं बैठ गई थोड़ा बहुत काम शाम करने एंड बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही. एनीवेज अभी चलते हैं पूल. बहुत ज़्यादा लेट हो गया बट वी विल स्टिल गो टू द पूल. लेट्स गो. Spot a very big crab here. Bhai sahab, this is crazy. ये तो mama. उड़ता है वो. Mama. So after pool we came to room and took a very lamba sa shower. And now I'm starving because I'm very hungry. So we're gonna be eat some starters now. And उसके बाद में we will be having, like I will be having my dinner. Hi guys, good morning. It is 10 and 10:30 a.m. in the morning and we are already running late because पहले तो हमारे plans थे that we will go to pool 8 बजे उठ के सुबह but unfortunately वो नहीं हो पाया because रात को हम लॉकअप देखते रह गए थे नेटफ्लिक्स पे. So that's why I'm using our background का आवाज़ because यहाँ कुछ काम चल रहा है. We slept almost around 5ish और 5:30ish a.m. कुछ तो exactly don't remember but 5 बजे हम सुबह सोए because हमको लॉकअप देखना था. अभी because we are already running late तो जल्दी से without wasting any time we need to get freshen up and all. I'll quickly change my outfit. थोड़ा बहुत property का shoot बचा है. We will wrap that up. And उसके बाद में we're gonna have our breakfast or then we will leave for our home because I have one more shoot a line that is around 2:33 p.m. So we need to reach home anyhow by 1:32 p.m. so that मैं घर जाके ready हूँ and then I can leave for the shoot on time, you know, because जिस चीज़ का शूट है दैट्स एग्जीबिशन जो आज और कल ही होने वाला है. तो एनी विच वे आज हमको शूट करके उसका अपलोडिंग भी करना है, एडिट करके अपलोड भी करना है. सो या दैट्स द प्लान. लेट्स गो. I forgot to vlog guys. We are having our breakfast and we have so many things. आलू पराठा,
some fruits, poha, upma, fruit juice and chai bhi aa rahi hai. By the way, this is how I am looking right now. I don't know if you guys can see or not properly, but yeah, we will be having our breakfast अभी. उसके बाद निकलते हैं. बारिश अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, बट आई डोंट नो अबाउट नागपुर कि वहाँ पे हो रही है नहीं. आई एम जस्ट होपिंग कि वहाँ ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत तो चलती है. गाइस, मैं ये प्रॉपर्टी सोच रही थी बड़ी है, बट ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी है जितना मैं सोच रही थी. बिकॉज दिस इज सो ह्यूज. Was there 2 BHK villa and now this is their 4 BHK villa. I'll give you a tour इसका भी. And if you want to come with a group of your friends or you want to come with your family, this place is literally perfect because they do have different options. Like also you can come as in couple because they do have options for everything, literally for everything. And every room, each and every corner is so picture perfect. Bhai, seriously, not exaggerating and not even lying and not saying just because this property is sponsored, but it is so good. It is actually so good. This is their 4 BHK villa and you can see it is so huge and beautiful. At the same time, it is time to say bye bye to this beautiful property because we are doing checkout. और अभी almost 1:30 हो गया and I think 1:30 नहीं 1:15 हो गया and 1:30 2 PM तक हमको पहुंचना था, which is practically not possible कि हम अभी 2 PM तक नागपुर पहुंच पाएंगे because at least 2 hours तो लगेगी and it completely depends on weather. वैसे तो अभी बारिश रुक गई है but there is a possibility कि बारिश आए. So anyway, let's see क्या होता है अभी and कितना टाइम जाता है. And by the way, thank you so much for watching this vlog. I hope you all enjoyed watching this vlog. And yeah, again, if you want to come, you can come with your friends, family and your loved ones to this property. I'll tag over here, ऊपर में नीचे आसपास कहीं पे भी. So yeah, thank you. Guys, I hope you all enjoyed watching this video. And अगर वीडियो पसंद आई हो तो you know what to do. Hit the like button, bell button and do share this reel with your friends and families if you want to come here. So and yeah, that's it. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.